Right, and at the moment with us from the Vishwa Hindu Parishad, Sriraj Nair Sahab. Sriraj Nair Sahab, namaskar. नमस्कार नमस्कार। Vande Mataram, sir. Vande Mataram. वंदे मातरम। जय श्री राम। जय सिया राम सर। एंड आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश उत्सव की बहुत बहुत चतुर्थी तो खैर खत्म हो गई, आज तो 5वीं तिथि आ गई है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। गणपति आ गए हैं। आपको भी राजीव जी, प्रदीप जी, आपको भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव की। श्रीराज नायक साहब जरा ये बताएं, प्लीज डू टेल अस व्हाट यू थिंक प्रॉम्प्टेड Mr. Udayanidhi Stalin to say what he did with regard to Sanatan Dharma. What could have prompted him to do that, sir? Well, first of all, the mindset of the DMK leader is quite known to all, because his father, late Mr. N. Karunanidhi, was also quite vocal as far as speaking against the native Sanatan Hindu Dharma, and he tried to ridicule many times. But then at the same time, whenever he ridiculed about Lord Rama, and if you remember, once he said about where did Lord Rama did his engineering. Then the second day he fell ill and he was hospital in Sri Ram Hospital. He was hospitalized in Sri Ram Hospital in Chennai. So they are quite known to be Hindu bashing people. Now here in this, what we feel is it is a purely a political statement. The rise of BJP and the Padyatra undertaken by Annamalai has literally scared them, and the crowd which is joining Mr. Annamalai, it's really a matter of great worry for DMK leaders. So they wanted to ensure that, if they try to divide, because like in other parts of the country, like in Gujarat, or even for that matter Karnataka or UP, where Hindus have polarized, Hindus have become one. In fact, in the past, there used to be a history of polarizing Muslims and dividing Hindus. Now Hindus have awakened and they are coming together. So that is becoming a great area of worry for DMK, and even BJP got around 5 seats as far as I remember in the assembly elections. So it is pure, and just saying it's a big threat the way it happened in Bengal, where Trinamool is still ruling, but the biggest largest opposition is BJP now. So that same story is going to repeat in Tamil Nadu. So that area, because for that reason only, because of their political insecurity, Mr. Udayanidhi Maran gave this statement. It is not a statement, rather it is a very choreographed statement, and well decided statement, and given in a planned way. But Sriraj Nair Sahab, don't you think this is a continuation of what E.V. Ramaswamy, otherwise known as Periyar, and a couple of all these other guys who started the Dravida movement? They, in fact, if you remember, just before 1947, they had taken a delegation to England, to London, actually to tell the British that they need a separate country. They don't want to be part of the United India. They actually said that, including Periyar, where he said that we are now going to be dominated by Brahmins otherwise. Now, do you think this is a continuation of that same separatist movement, which is why Mr. Udayanidhi Stalin is saying all this? Although he made this kind of statement, Mr. M.G. Ramchandran was the CM for many years. Yes. And he was a bhakta. He openly, Madam Jayalalitha, she used to go almost every 6 months to Guruvayur temple. Yes. So all the statement maybe they have made in their respective times, but then that has not worked in Tamil Nadu. Tamil Nadu has so many ancient temples. It is the Tamilians, the Cholas, who took Hindu Dharma to South Asian countries. I recently visited Bali. So if you see Cambodia, Bali, Vietnam, if there are temples, it was all bought by the Tamilian Hindus. So nobody can. Tamilians are. It's a very ancient. And if you see even the Ramayana, it is written thousands of years ago in Tamil. The second oldest Ramayana. The second oldest Ramayana in the world comes in Tamil. Yeah. Kamman So Ramayana. nobody, all of the stunts what this so-called Dravidic parties tried, Yes. it didn't work in Tamil Nadu, and it is not going to work in Tamil Nadu.
Maybe electorally, DMK might have won the election, but Hindu bashing, they are going to face music. Definitely, what happened to Mamata Banerjee, she lost. Although I'm saying BJP may not have come to power, but they lost substantial seats in West Bengal. In Lok Sabha, they have 18 seats, and BJP has got 18 seats, and TMC 22. So they came here, and it is only because of the Hindu bashing. Now here, Udayanidhi Maran has done the Hindu bashing. The Hindus are going to awaken. Udayanidhi Stalin, sir, not Maran. Stalin. But you know, Srirajji, don't you see that this entire plot, the BJP is... Sorry. BJP is... Srirajji, the entire plot, BJP is actually gaining because Anna DMK is nearly not there. Jayalalitha, after the demise of Jayalalitha, Anna DMK is no longer a force that it used to be. Now there's a huge vacuum. And in its attempt to protect its own voter base, voter share, Junior Stalin and the DMK is actually protecting their turf. Because Annamalai, as you said, is doing a door-to-door campaign across Tamil Nadu like it's never seen before. And indirectly or directly, this entire exercise is going to benefit the BJP because you are carrying the flag of Sanatan Dharma, which Srirajji. Don't you think this is going to be a great beneficial? You're going to take a big leap where Tamil Nadu is concerned. Srirajji. See, politically, I won't be giving any statement, but definitely this kind of statements is definitely going to help the Hindu Dharma, the Hindu code, and Hindus are going to be polarized. And as far as, let me make it into political statement also. The way Jagan Mohan Reddy told the entire Andhra Pradesh came to power, this is going to be a similar situation. I won't be surprised if BJP forms the government also in the next assembly elections. Might happen because Annamalai is doing a great job. Annamalai is doing an absolutely great job in Tamil Nadu. But the only thing is... He's the ex-IPS, so he knows, he's a learned man. And here we must say something. By the way, let me say something over here. At the moment with us, Mrs. Sriraj Nair of the Vishwa Hindu Parishad. Please do send in your comments, as many comments as you can. And in case you have any questions for Mr. Sriraj Nair, please do send them in. I'll put them across to him. And try and be respectful. Even if you're not respectful, it doesn't make a difference. Anyway, you can be as disrespectful as you want to me. There's no problem at all. But I'll tell you what, the soul of Tamil Nadu is Sanatan Dharma. Sanatan Dharma exists today because of the purity of the religion which was kept in Tamil Nadu by the Sangam literature, and later on, and even prior to that, by all the Brahmins who kept up all the holy books, who kept up the entire tradition. So how can you separate Sanatan Dharma from Tamil Nadu? Sriraj Nair sir, please do elaborate. How can anybody even think like that? Sir. See, this is, in Hindi we say Vinash. This is absolutely Vinash Kale Viprit Buddhi. Ji. The way he, as I said, this is pure, and they have become insecure. The response which Mr. Annamalai is getting for his Padyatra, that has scared them a lot. And they know, because Mr. M.K. Stalin is a veteran, he has seen Tamil Nadu politics very closely, and he knows what can happen. So this is a weapon which they try to use to counter the rise of BJP and Hindutva forces. But this weapon is going to make BJP more stronger. As you heard the statement of Mr. Sanjay Raut also, what he said, BJP ke haath mein hatiyar de diya, and now it is going to be, they are going to pay a big price, because every Hindu, every respectable, self-respecting Hindu in Tamil Nadu, irrespective of his caste background or whatever it is, they are agitated and they are going to polarize. And this statement of Udayanidhi is a big blunder and a foolish statement. So rather than doing some good work for the state, rather than uplifting people from poverty, rather than stopping people of Tamilians from migrating from Tamil Nadu and look for work in other states, they could have done some development work. They could have created employment. They could have done something for the temples. Instead of that, they have done negative politics. It's going to go again. Sir, Sriraj Nair Sahab, we want to know, there was a statement of Amit Shah in the parliament. Amit Shah in the parliament said, Ram Mandir ka
Punarnirman, the rebuilding of the Ram temple, it has happened after 550 years. 550 साल के बाद अगर किसी ने राम मंदिर को वापस बनाया, वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, इस सरकार ने बनाया. That was a great moment because after Babur's invaders destroyed the Ram temple, and actuality it is this government, Mr. Modi, and you have been able to reconstruct the temple right now. Along with that, the other Kashi Vishwanath ho gaye, the corridor, Krishna Janmabhoomi mein jis prakar se movement ho raha hai. Now this seems to be a biggest revival of the Hindu period. How do you see that, Sriraj Nair sahab? Don't you think this is when you talk about revival of the Hindu movement, I think this particular years is going to be stand out in golden letters. कैसे देखते हो? How do you see it, Nair sahab? देखिए प्रदीप जी, हमारे देश को करीब करीब 1000 साल आक्रांताओं का राज झेलना पड़ा बड़ी बर्बरता से. और इस विश्व में कई सभ्यताएं थी, माया सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, प्री इस्लामिक इजिप्शियन सभ्यता, निग्रो अफ्रीकन्स की अपनी सभ्यता. ये तो अब्राहमिक कल्ट ने, चाहे वो इस्लाम बोलो या क्रिश्चियनिटी, इन सारे सभ्यताओं सिविलाइजेशन को नस्तो नाबूद करके खत्म करके आज अगर आपको उनको देखना हो, पाना हो, जानना हो तो आपको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में जाना पड़ेगा. इस हमारे भारत भूमि में भी इन आक्रांताओं का राज, चाहे मुगल, तुर्क और लोधीज और ये खिलजीज, इन सब का राज करीब करीब 500-600 साल रहा. उसके बाद पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश का राज रहा. तो कुल मिला के 900-1000 साल के बाद भी आज भी इस पृथ्वी पर 120 करोड़ हिंदू हैं. इस हिंदू धर्म को कोई मिटा नहीं सकता. इस पृथ्वी पे चलने वाला हर 7वां व्यक्ति हिंदू है. इसलिए ये जब इतने बर्बर आक्रांता हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाए, ब्रिटिश, डच, पोर्चुगीज और ये सारे जितने यूरोपियन इन्वेडर्स थे वो भी नहीं कर पाए, तो ये स्टालिन और उनकी जमात कुछ नहीं कर सकती. हिंदू धर्म पूरे विश्व में बढ़ता चला जा रहा है, संख्या हमारी बढ़ रही है. सारी सभ्यताएं जब खत्म हुई, हिंदू धर्म सर्वाइव. हम एक किसी शायर ने कहा था, कुछ तो बात हम में कि मिटती नहीं हस्ती हमारी. तो हिंदू धर्म को कोई आंच नहीं आने वाली. ये सब जिनका धर्म बदल के, जिनके पूर्वजों ने धर्म बदला था, वो भी धीरे धीरे घर वापसी करेंगे. वो धीरे धीरे पुनः अपने पूर्वजों के धर्म में आएंगे. और बाहर भी हम सब देखते हैं, हमारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा विदेशों में, चाहे वो इस्कॉन हो, श्री श्री रविशंकर हो, चिन्मय मिशन हो, इस संतों का प्रवास बाहर रहता है. बाहर की यूरोपियंस भी बड़ी संख्या में आज हिंदू धर्म की तरफ आ रहे हैं. तो ये सारी जो बातें हैं उदयनिधि या स्टालिन गैंग की, इससे कुछ नहीं होना. सर यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टू मूव अवे फ्रॉम तमिलनाडु. तमिलनाडु तो कुछ होने वाला नहीं है. सी सारी बातें वहां पर, लेट्स बी वेरी क्लियर. सर कल्चर ही ऐसा है, क्या करोगे? संस्कृति ऐसी है, उसके बारे में क्या कर लोगे आप? जो आपने अभी कहा है, जब रंग रंग में सनातन है तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते. लेकिन सर दूसरी चीज क्या है कि अभी लेस्टर सिटी जो है इंग्लैंड में, वहां से फुटेज आई है कि किस प्रकार लोग गणेश चतुर्थी मनाने को जा रहे थे, और वहां पर जो पुलिस है, दे आर ऑब्वियसली they've identified those policemen as being of Somali origin, Muslims of Somali origin. They've stopped these Gujaratis and other Hindus from going into the temple. These same people had done the same thing earlier. Bageshwar Dham की जब कथा होने वाली थी, उन्होंने ये सब किया. So what do you think is happening over there? Is there a movement all over the world against Hindus? And look at what's happening in Canada. कनाडा में खालिस्तानी सरेआम पोस्टर लगा रहे हैं, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को ये कर दो. जितने भी कनाडा हिंदूज ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, सब लोग वापस इंडिया जाओ. सो डोंट यू थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू डू समथिंग हियर? Yes, ये कुछ मिसगाइडेड से हमारे सिख भाइयों में कुछ लोग मिसगाइड हुए, कुछ लोग शायद ISI के पॉन्स हैं, बट अधिकांश, मैं कहूंगा 97-98% सिखों का भारत के प्रति प्रेम, और भारत उनकी भूमि है. गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने, सभी ने हिंदू धर्म के लिए ही काम किया है. और सभी यहाँ के जितने सिख भाई हैं वो अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर ही रह रहे हैं.
केवल कुछ 1-8% बोल सकते हैं जो मिसगाइडेड है या जो भी कनाडा में है सर, अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट है, दे आर नॉट हियर, दे आर नॉट इन इंडिया जी। हाँ, और वो भारत में नहीं है जी। दूसरा ये जो यूके में जो हो रहा है, ये भी यूके जो माइग्रेंट्स जिस प्रकार से उन्होंने माइग्रेंट्स को और वहां पे उन्होंने स्थान दिया है विशेषकर मुस्लिम कंट्रीज से, अब वो फ्रांस और ब्रिटेन भी जो है अपने दे आर पेइंग अ बिग प्राइस फॉर द कॉलोनाइजेशन ऑफ दिस कंट्रीज वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। दैट्स तो राइट। ये सारे जो मुसलमान वहां आए हैं, अब वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा थ्रेट हो चुका है। तो वो जो थ्रेट वो जो थ्रेट है वो वहां के रहने वाले हिंदुओं को भी भुगतना पड़ रहा है। पर हमें पूरी आशा है, ऋषि सोरेन जी स्वयं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, यूके में प्राइम मिनिस्टर है, तो इन सारे जिहादियों को कुछ लेंगे, ऐसी पूरी आशा है। दुरुस्त बात। नायब साहब, एक चीज है कि योर सपोर्ट, सुरेंद्र जैन जी वीएचपी के सीनियर लीडर है, उन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया 4 दिन पहले, बोले कि मोनू मानेसर बजरंग दल का कार्यकर्ता है, उसने हजारों गोवंश की रक्षा की है, माता और बहनों की रक्षा की है, सरकार को उसे गिरफ्तार नहीं सम्मानित करना चाहिए। नाउ हाउ दिस थिंग इज गोइंग ऑन नाउ, दिस एक्शन जिस प्रकार से हो रहा है एंड वीएचपी ओपनली सपोर्टिंग मोनू मानेसर, नायब साहब इसको कैसे देखते हो आप? I mean, are you totally in support of Monu Manesar? We are absolutely. See, Dr. Surendra Jain is the Joint General Secretary of VHP, and the statement which is issued is an organization statement. It is absolutely right. We are all in full support of Monu Manesar, who we feel innocent, is being targeted. It's being a witch hunt by the Congress party in Rajasthan to polarize Muslims and appease Muslims. Monu Manesar is absolutely innocent. He is a Gaurakshak. He has saved thousands of cows. He has been working for the SANATAN HINDUTVA in Haryana, and we are proud of him. He is our Bajrang Dal cadre. He is our Jilla Secretary in Haryana, and we are fully backing him, and we will provide all the legal help to Monu Manesar, and if required, we will go for we will go for agitations also. We will ensure that he. So, do you think he's been framed, sir? Yes, I said he's absolutely been framed by the Rajasthan government, because elections are nearing and they want to, whatever 8-9% Muslims are there in Rajasthan. Last time some dent had happened because BSP also contested. So they want to ensure, in the way they did in Karnataka, they want to polarize Muslims in Rajasthan. That is the only thing, and we've been just. So, but what about all these social media posts? They say that there are lots of social media posts of Monu Manesar exhorting his followers to violence, telling people to go out and kill Muslims. What about that? Are those posts fake? Have they been put out by somebody else? You show me one post where he says that go and kill Muslims. Rather, there are the videos of Muslim ulemas and clerics where they are saying that एक मुसलमान कम से कम 10 हिंदुओं को मारे. So this yatra which undertook, which was there in Nuh, it was a peaceful yatra which had small kids, women and elderly. So why is that happening, Mr. Sriraj Nayak? Can you hear me, sir? Have we lost him? I think he's frozen. I think his frame is frozen. Who was the MLA? Yeah, Mr. Nayak, one small thing. Why do you think this is happening now, where every procession is being attacked? राम नवमी की procession हो, कोई और procession हो, कुछ भी हो, हिंदुओं को लेकर के, why do you think stoning is happening, this kind of thing is happening? Why now? No, it is like ये global phenomenon है. ये पत्थर मारने वाला phenomenon अगर आप देखें, ये स्वीडन में भी पत्थर मार रहे हैं, केरला में भी पत्थर मारते हैं, मस्जिदों के बाद जुमे की नमाज के बाद पत्थर मारते हैं, कश्मीर में पत्थर बच्चों के हाथ में पत्थर दिए हैं. सो ये पत्थर मारने का जो जिहादी फिनोमेनन है, ये कॉमन है और कई वर्षों से चलता रहा है. अब जो है कोई हिंदू प्रतिकार कर रहा है. पहले कांग्रेस के राज में तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ऊपर थी, हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा था, सेकंड ग्रेड सिटीजन. अब हिंदू जाग रहा है तो ये सब दिख रहा है. अब हम खाली प्रतिकार कर रहे हैं तो हम बदनाम हो रहे हैं. ये पत्थर मारने का रिवाज या जो भी इनके पता नहीं, ये आज से नहीं, कई वर्षों से है. हिंदू अगर मंदिर से बाहर आते तो प्रसाद बांटता है. ये लोग क्या सीख के आते हैं कि मस्जिद के बाहर आके पत्थर मार रहे हैं. तो ये जो इनकी कौम के रहनुमा जो है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए. कौम इतनी पिछड़ी क्यों? अभी भाई साहब आपके पहले बोल रहे थे उनको आरक्षण चाहिए. अरे आरक्षण क्यों चाहिए? अगर आपकी कौम के आप जो लीडर्स हैं
आपकी कौम को पिछड़ा रखने में लीडर्स और रहनुमाओं का सबसे बड़ा हाथ है। उनको पढ़ाते लिखाते नहीं है, उनको रोजगार के संसाधन नहीं मुहैया कराते हैं। इलेक्शंस आते हैं तो डेटा लेके घूमते हैं, सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स है, सबसे ज्यादा कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, मुफलिसी है, गुर्बत है, गरीबी है, बेरोजगारी है। तो इन सब बीमारियों का निवारण करने के बजाय हाथ में पत्थर रखते हैं और कौम पिछड़ी रह जाती है। फिर सच्चर कमीशन का हवाला दिया जाता है, मिश्रा कमीशन का या महमूद कमीशन, ये कमीशनों का हवाला दिया जाता है। तो कोर जो इशू है, जो सिम्टम्स है, उनको एड्रेस करना और जो कोर बीमारी है उनकी कौम को, अपने कौम को कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं, वो नहीं करने की वजह से सारी तकलीफें हैं। श्रीराज जी, और एक जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा था कि आप अपने शौर्य यात्रास में धर्म योद्धास को एनरोल कर रहे हो। ये फिर आपने प्रेस रिलीज निकाल दिया, कहा शौर्य यात्रास undertaken for awakening the Hindu society, offering homage to martyrs and for strengthening the Hindu values. Your press release says, he says you don't recruit anybody to challenge anybody in your, तो ये धर्म योद्धास वगैरह एक अफवाह था। श्रीराज जी, देखिए प्रदीप जी, धर्म योद्धा का रिक्रूटमेंट ये गलत खबर थी। इसको खंडन करते हुए माननीय आलोक कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है। ये शायद इंडियन एक्सप्रेस ने इसको किस तरह से पोर्ट्रे किया था, बट ऐसी कोई बात नहीं है। ये देश भर में शौर्य यात्रा निकाली जाएगी और ये बात बिल्कुल पक्की है। जितने लोग बलिदानी है, जिन्होंने भी देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, गौ गंगा के लिए जो अपना जीवन दिया है या अर्पण किया है, उन सबका सम्मान किया जाएगा। तो युवाओं के अंदर जोश भरा जाएगा राष्ट्रीयता के लिए। बाकी धर्म योद्धा को रिक्रूट करने के बाद ये हमने इसको खंडन किया। हम ये बिल्कुल सही नहीं। राइट, चलते चलते सर एक चीज आज अच्छी हुई है। आज 1.5 दिन का गणपति था श्रीराज नायक साहब, 1.5 दिन का गणपति था जी। तो जुहू बीच के ऊपर 2 साल के बाद असल में समुंदर में विसर्जन करने का मौका मिला। क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि गणपति का विसर्जन समंदर में नहीं होगा साहब। अरे यार, पता नहीं कितने टन, कितने हजारों लीटर मलबा, सुएज हर रोज समंदर में जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गणपति का विसर्जन नहीं होना चाहिए उसमें, समंदर में। इसको लेकर के महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने एजिटेशन भी करी थी कि व्हाई आर रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ओनली ऑन हिंदू फेस्टिवल्स, व्हाई नॉट ऑन अदर्स। So I am glad to say immersions were allowed. This time immersions were allowed. It's a welcome. I hope it remains. I hope suddenly people don't get up and say, hey, stop it. As if one small Ganpati, a 10-day-old Ganpati festival is going to destroy the sea, which has already been destroyed the whole year round by all the untreated sewage which has been going in, and with no sign of the sewage treatment plant so far. But Shriraj Nayak Sahab, thank you very much for joining us. Great pleasure as always talking to you. And once again, गणेश उत्सव की आपको बहुत शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। Thank you, sir. Thank you very much.